Yes, I think especially from the family members and friends, they have told me that my rank especially has inspired them, that they can also maybe improve their marks or rank. So it's always very nice to hear that. There's something about being an inspiration to one or to many. And who's someone who is an inspiration to us? An inspirational person is one who believes a lot in themselves and also does and believe in others. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with toppers and initiated by Unacademy. I'm Fiona. And आज हम जिस टॉपर से मिलने वाले हैं, उन्होंने अपनी जर्नी में लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 556 अचीव किया था. And this year, she did not stop. She went ahead and managed to get a single digit. That's the All India Rank 5. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, I'm sure all of you already know her. She has become an inspiration to so many in her hometown as well as in the entire country. Everyone, let's welcome Mamta Yadav. Hi Mamta, welcome to the show. Hi, thank you. So, जैसे कि मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में कहा ममता, I have been seeing कि there are many people who are writing that आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो. तो ये क्या आपने भी सुना है अभी काफ़ी like since the results came out, and कैसा लगता है ये सुनकर? Yes, I think especially from the family members and friends, they have told me that my rank especially has inspired them, that they can also maybe improve their marks or rank. So it's always very nice to hear that. Amazing. So Mamta, on this show usually जब हमारे toppers आते हैं, and it's a special feeling for me because आपने All India Rank 5 achieve किया, and last year around same time, a little before, I was interviewing Shrishti, who was also All India Rank 5. So it's just bringing back memories for me, and I feel so good seeing another girl topper on the seat. तो आज हम थोड़ा differently start करने वाले हैं. Log usually when results come out and all, people get popular and all of that. So there's a lot of things people start searching about for you. तो अब मैं क्या करने वाली हूँ? I'm just going to go on Google and I'm going to put in your name and I'm going to see सारे learners जो है क्या Google कर रहे हैं अभी फिलहाल, and what is the main thing they want to know about Mamta Yadav. So everyone, this is Google's most search. Let's find out what are our learners wanting to know about Mamta Yadav. So सबसे पहले when I type in Mamta Yadav, it obviously comes as Mamta Yadav IAS. So yes. Tell me more about your preference. क्या IAS ही आपकी main preference है and क्यों? Yes, my first preference is IAS only, and I think it's the same reason as most other people, that the diversity that IAS offers is probably not there in other services. For example, अभी भी मैं I am an IAPS, so there is. That is also a very good service, but perhaps the diversity and the opportunities IAS offers are more. So that was my first preference. Amazing. तो अगर IAS नहीं होता तो what would have been your second preference? तो मेरी second preference, unlike many other people, was IRS, income tax. And this year I had decided that अगर मुझे IRS भी मिलता तो I was very likely that मैं दोबारा एग्ज़ाम भी नहीं देती. So I had decided that either first or second preference I get, I'll be done with it. Great. So again, because I know that आपको फिर obviously because of that amazing rank that आपने achieve की, you have got your preferred IAS. But अगर IRS maybe, as you said, you would have been happier with it also. Then IRS में what would be the post that you would be happy with? IRS maybe there are quite a lot of areas. So IRS has two, income tax and customs and central excise. So my first preference was income tax, and then the customs and central excise. कोई बहुत specific reason नहीं था इन दोनों में से first choose करने का. I think it's just that most people know more about income tax और वो ही usually first preference रहती है. तो I put it as my second preference. But otherwise there is no such. I think कि बहुत ज़्यादा comparison का कोई scope नहीं है. दोनों में they are both very good services and would have been equally good for me. That's nice. The reason why I asked you this question was also because जैसे कि आपको भी पता होगा, बहुत सारे learners हैं हमारे who write to us that when you need to put in your service preference, they really get confused.
most of them know IAS, so first Yes. you need to fill in, and uske baad they are really clueless that what should be the next, because there are so many things to think about. So if there would be just one tip if you have to give to the learners, that if they are also confused, how can they make a decision, that what could their preferences be, क्या कहोगे आप? तो काफ़ी सर्विसेज होती हैं एंड ज़्यादातर लोगों को आई थिंक IAS, IPS, IFS एंड IRS का ही टॉप 5 का ही पता होता है. तो उसके बाद आई वुड से कि जो सर्विसेज हैं दे कैन बी क्लब, जैसे कुछ अकाउंट्स की सर्विसेज हैं, देन देर आर सम डिफेंस सर्विसेज एंड देन देर आर सम ग्रुप बी सर्विसेज एज वेल, फॉर एग्जांपल दानिक्स. तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इन सब में आई वॉज वन पर्सन हु थॉट कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का सोचना इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल. तो आप थोड़ा बहुत इन सर्विसेज का जॉब प्रोफाइल गूगल या कहीं सर्च कर सकते हैं. एंड उसके बाद फॉर समवन हु इज़ इन डेली लाइक मी, आई वुड स्पेसिफिकली से कि आप दानिक्स को एक स्पेशल कंसिडरेशन दे सकते हैं if you want to be just in administration, because that service will give you a greater opportunity to be linked with administration. So for someone from Delhi, I would say do think over Danex once, but other than that, just look at the job profile of all these services once, and if they are offering what you want, then just fill that accordingly. For example, अगर आपको accounts पसंद है तो accounts की services ऊपर रख दीजिए. If you want कि थोड़ा defense से उसमें भी आपको link अच्छा लगेगा तो आप वो भर सकते हैं. And that is how it is. Great. So let me just quickly check what's the next most popular. So next is Mamta Yadav. So आप हमें बताइए Mamta Yadav before the exam. Who is she? Where has she come from? कौन है आपके family में? Tell us a little bit about your upbringing and your education. So my family hails from Mahendragarh district in Haryana, but I have been living in Delhi with my family for a very long time. I have done my schooling from Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan, GK2. After that, I did my BSc in Physics Honours from Hindu College, Delhi University. उसके बाद मैंने अपने कॉलेज के टाइम में ही SSC CGL की तैयारी शुरू कर दी थी, एंड राइट बिफोर माई कॉलेज एग्ज़ाम्स आई अपीयर्ड इन इट. तो क्योंकि वो एग्ज़ाम मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो माई फैमिली ऑल्सो सेड कि इफ़ यू हैव स्टार्टेड इट तो यही एग्ज़ाम पहले आप कर लो, क्योंकि उसमें काफ़ी डिलेज आ गए थे. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC इन 2018 इन मे, एंड 2019 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. आई वॉज thankfully I was able to secure a rank, and I was allocated the Indian Railway Personal Service, and this year I appeared again because I felt कि एक और attempt तो दिया जा सकता है. तो and yeah, I have been able to secure 5 rank. मतलब this is, although it's just your second attempt, जैसे कि आपने बहुत ही easily कह दिया, but like coming from a 3-digit 556 to a 5 is a very massive deal, and kudos to you. I think आपने बहुत ही अच्छा किया, and I'm sure all the learners who are watching also, उनको ये तो ज़रूर जानना होगा कि आपकी क्या थी strategy, क्या थी resources, because those are the most common questions जो सब पूछते भी है. So the next thing, surprisingly the highest searched is Mamta Yadav mark sheet. So if you can just tell us a little, आपके सारे GS papers में क्या scores आए थे आप? So my mark sheet, I have been told, is a very balanced mark sheet, as in I have, like last year also I had a balanced mark sheet. It was not that कि मैंने किसी में बहुत poor किया है and somewhere I have excelled. So this year I had 145 in essay. In GS paper 1 I had 101, then paper 2 102, paper 3 I had 111, paper 4, that is ethics, I had 107. In optional my combined total is 292, and interview is 187. Wow, that's I think जैसे कि आपने कहा very well balanced. Yeah. फिर भी interview में I'll say it's quite a good score. Yeah. Closer to 200. So great. So apart from that, I see the next question obviously comes in is Mamta Yadav optional subject. जिसके बारे में तो हम obviously थोड़े आगे जाके बात करेंगे. उसके बाद the best thing is that most of the things after that is all about Mamta Yadav Instagram, Mamta Yadav Facebook. So social media. So आप कितने active हो on social media, and during your preparation phase how active were you? So I am not very active on social media. I was like even during my preparation phase I was just using WhatsApp, and Instagram also I started using after giving my second mains.
because I feel that till prelims and mains is the most crucial part, जिसमें you have to put in a lot of hours also. तो मुझे लगा कि तब तक तो सोशल मीडिया थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव बन जाता है, तो आई डिड नॉट हैव. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर माई सेकेंड मेन्स, आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम, बट नथिंग अदर देन दैट. Okay, great. So this is again something for all the learners. अगर आप भी, you know, if you are on social media or you're thinking whether social media, क्योंकि I think again there are two sides of it. Yes. Some people completely cut off from social media thinking it's an evil, and some people are very very active because they use like WhatsApp, Telegram, ये सब भी use करते हैं for preparation. So I think it all depends on you on how you balance your preparation. Great. तो ये तो थे most asked questions. अब you know, let's get on to the actual preparation जो आपकी हुई थी. So you know, so you told me that कि जब आप कॉलेज में थे आपने SSC की तैयारी शुरू की थी, CGL की. First of all, before we get into UPSC, कैसी गई थी आपकी CGL also? So I had cleared that exam, but उस exam में because of certain reasons there was a lot of delays. So by the time I got my job joining letter there, I had gotten my UPSC का result. तो मैंने उसे join नहीं किया, but I was able to clear that. Okay. Amazing. So एक चीज़ मुझे आप you know just बता दो कि CGL क्योंकि आपने already उसके लिए भी prepare किया था, you attempted that also. Did you know preparing for CGL anyway help you, or do you think was anyhow related with your CSE preparation? So one way in which I think that helped me was कि मैंने इससे पहले कोई competitive exam नहीं दिया था. मतलब even after 12 मैंने JEE and all those exams I did not appear for them. तो एक तरह से I think उस एग्ज़ाम को देखिए थोड़ा वो कंपटीशन वाले कि आपको आप एक साल पढ़ाई करते हैं और आपको 1 घंटे या 2 घंटे के पेपर डिटरमाइन करेगा कि आपकी वो सारी हार्ड वर्क का क्या रिजल्ट रहेगा. सो इन दैट फेमिलियरिटी आई थिंक दैट एग्ज़ाम हेल्प मी to handle that heat of the competition. But other than that, I would say the syllabus is very different, and it's a very CGL is completely objective, and in UPSC we have mains which is completely descriptive. So in that way, I would say not a lot of overlap. Understood. But I think as you mentioned, it's a very good you know reality check also, especially अगर आपने इससे पहले कभी कोई you know all India competitive kind of exams नहीं दिया है, then it gives you a good understanding of what it could be, right? Great. So अब हमें बताइए कि you know CSE की तैयारी, since CGL की आपने कही like you started it while you were in college, CSE की तैयारी आपने exactly कब से शुरू की, and what would be the duration that you think for your first attempt that you actually took for giving that first attempt? You know, थोड़ा सा अगर आप हमें वो बता सकें. So I started preparing for UPSC in May 2018. Okay. And I think the 2019 prelims was almost 1 year and maybe a month after that. Okay. So I think that is the ideal timeline which most people also take कि आप prelims के at least 1 साल पहले तो ज़रूर start करें. अगर जैसे काफ़ी लोग जॉब छोड़कर आते हैं तो इफ़ यू हैव मोर टाइम देन इट्स डेफिनेटली बेटर, बट 1 साल तो आई थिंक इज़ मस्ट. तो आपने भी मतलब कॉलेज में ही you know you started the preparation? No, in college I had not done any preparation for UPSC. Okay. I started in like I graduated in 2017, so I started in 2018 Okay. May. Understood. Yeah. Understood. So you know अब आप हमें बताइए कि ये जो preparation आपने कहा 1 year is a good time to do, right? So in your case obviously you were completely preparing for the exam, right? You weren't working along with it or anything yes, like that? I was completely preparing for exam, and since I am already in service तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता भी है कि मैंने जॉब के साथ करा है, but it is not so क्योंकि मैंने मेरी joining जो थी वो मेंस के बाद थी. तो it was only for the interview preparation that I was with the job, and but till the mains which I think जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा time and you have to study for a lot of hours, that was completely preparing mode and no job or anything else side. Understood. So and after that, like अगर आपका जो first attempt था and now that the second attempt, obviously second attempt के लिए you already knew a lot of things जो आपने first attempt की तैयारी में की थी, but what will be the major difference that you think you spotted आपके खुद के preparations में, अगर आप वो थोड़ा सा हमें बता सकें.
तो लास्ट ईयर और इस साल की प्रिपरेशन मैंने जो ज़्यादातर गलतियाँ अपनी प्रिपरेशन में करी थी दैट वाज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, बट विद टाइम आई वाज फॉर्चुनेटली एबल टू आइडेंटिफाई माय मिस्टेक्स और मैंने टाइमली उनको करेक्ट कर लिया। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा जो था ज़्यादातर वो रिफाइनिंग का प्रोसेस था कि प्रीलिम्स में भी मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू किया कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ मैं और ज़्यादा स्कोर कर सकती थी। सिमिलरली एक मेंस के भी नोट्स में मैंने उन्हें और बेटर करने की कोशिश करी। देन आई ट्राई टू डू सम वैल्यू एडिशन जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे से नहीं देखे थे, बट दिस टाइम आई हैड डन देम लाइक वेरी थरोली। सिमिलरली जैसे मेंस के लिए भी आई डिड सम वैल्यू एडिशन की ARC की रिपोर्ट्स हो गए या नीति आयोग का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, तो उस टाइप का वैल्यू एडिशन। सो द मेजर डिफरेंस वाज एक तो रिफाइन और दूसरा कि जो भी चीज़ मैं पहले अटेम्प्ट में टाइम की वजह से नहीं कर पाई थी उनको मैं और ज़्यादा टाइम देके करूँगी। अंडरस्टूड। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यू नो स्पेशली बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं जो बिगिनर्स हैं, कंप्लीट बिगिनर्स, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि अगर आपने जैसे कहा 1 year इज़ अ गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, तो अगर ये 1 year में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली पीपल हु आर बिगिनर्स, दे आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, व्हाट वुड बी अ सजेशन दैट यू वुड गिव? कैन उनको कैसे, हाउ शुड दे मूव अहेड? कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पिक करना चाहिए, और इफ़ यू हैव a time duration जो आप रखते थे for yourself, if you can just explain कि अगर आप एक beginner की तरह अभी शुरू कर रहे होते हैं and 1 year की preparation आप शुरू करने वाले हो, what would be your strategy for preparation? तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन लगाएं, और आप जैसे यू कैन गो थ्रू सम टॉपर वीडियोस, आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आए, एग्ज़ाम के प्रोसेस से फेमिलियरिटी हो। गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, एंड इफ़ यू गो थ्रू देम, इफ़ यू गिव अ वीक टू दिस, यू विल रियलाइज़ कि 80% चीज़ें जो हर टॉपर या एनीवन हु हैज़ क्लियर दिस एग्ज़ाम, दे विल से द सेम थिंग्स। बुक लिस्ट भी काफ़ी हद तक सबकी सेम ही होती है। तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए, देन यू शुड प्रिपेयर अ बुक लिस्ट, और इस बुक लिस्ट में भी सबसे पहले वो चीज़ें करिए जो सब में कॉमन है। फॉर एग्जांपल NCERTs, बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, विच यू डोंट हैव टू डाउट ओवर देम। जो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको भी डाउट है, जो सबकी यूनिक होती हैं, यू कैन डू देम लेटर, और वो प्रोसेस में आपको अपने आप ही रियलाइज़ भी हो जाएगा। उसके बाद आई वुड से कि जो 4 मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, start you can do with them. You can start with the NCERTs and then move over to the standard books for these subjects, and this I think should take 3 to 4 months. Then उसके बाद आप एक बार जब ये बुक्स एटलीस्ट एक रीडिंग आपकी हो जाए, तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट बोथ द रिविजन ऑफ दीज टेक्स्ट एंड ऑल्सो आप अपना ऑप्शनल की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल इवन दो इट इज़ नॉट आस्क्ड इन प्रीलिम्स, बट सिंस इट टेक्स काफ़ी टाइम लगता है उसे तैयार करने में, तो मेन से पहले कुछ तो प्रिपेयर होना ही होना चाहिए। तो आई वुड से कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 months यू डू योर बेसिक GS ऑफ दीज 4 subjects, देन फॉर 4 months यू कैन डू रिविजन अलॉन्ग विद ऑप्शनल। देन जैसे आपको लगेगा कि प्रीलिम्स पास आ गया है, एटलीस्ट 5 months पहले तो आप सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करिए, विच इज़ लाइक आप रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेडिकेटेडली फॉर प्रीलिम्स। सो आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से आपने ब्रेक करके ये बता दिया। सो इट्स वेरी गुड थिंग द वे यू एक्सप्लेन कि सबसे पहले आपने ब्लॉग से स्टार्ट किया, देन यू वेंट ऑन टू द स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनको कम से कम एक कंप्लीट कवरेज जैसे आपने कहा, एंड देन गो ऑन टू रिविजन अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्सेज उस पे। कूल। सो एक चीज़ आप ये बताइए, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ वेरी आस्क्ड क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में जब आप एज अ बिगिनर ही आप प्रिपेयर कर रहे हो, डेली शेड्यूल आपका क्या रहता था? लाइक हाउ मेनी आवर्स वुड यू गिव टू स्टडी, हाउ मेनी आवर्स टू ईच ऑफ द सब्जेक्ट, क्या होता था आपका पैटर्न? एंड अगर आप थोड़ा सा ये भी बता सको कि व्हेन यू स्टार्टेड क्या था, एंड बाय द एंड ऑफ इट एंड प्रोबब्ली बाय द सेकंड अटेम्प्ट क्या डिफरेंट हो गया था इन योर डेली शेड्यूल? तो टेलिंग एज कि आपने पूछा क्या डिफरेंट हो गया था, वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि स्टार्टिंग जब आप करते हैं
तो there are so many new things to learn that you are excited about learning them and you certainly don't feel bored पढ़ाई से. बट बाई द एंड ऑफ इट मुझे भी वो फील होने लग गया था कि सेम बुक्स आप कितनी बार पढ़ोगे एंड हाउ मेनी टाइम्स विल यू गो ओवर द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन. तो दिस इज़ द एडवाइस दैट आई वुड गिव टू एनीवन कि स्टार्टिंग में आप जितना टाइम आप दे सकते हैं, स्पेशली अगर सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप 12 घंटे आप if you're finding that my body is and my mind is able to give 12 hours every day, then please do give those 12 hours. क्योंकि जितना आप स्टार्टिंग में खींच लेंगे, अगर उसके बाद इवन इफ़ यू थिंक कि आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग अलॉन्ग विद इट और स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, आप बैलेंस कर पाएंगे बिकॉज योर फाउंडेशन वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो देन माई डेली रूटीन आई वुड से दैट मैं एक सब्जेक्ट ही लगातार पढ़ती थी. तो फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ टू वेक अप, देन in the morning itself I would cover my newspaper. Then I used to divide my timetable in slots कि at least 3 to 4 hours के 3 slots हों, so that 9 hours in the GS studies and 1 to 1.5 hours for current affairs. That used to be the my basic timetable. 3 to 4 hours का आप एक slot रखिए and उसमें भी you can have like small breaks of 10 minutes in between. But don't take too many breaks there also. Within the day also you should not take too many breaks, and overall for preparation there should not be too many breaks. Understood. So एक चीज़ if you can tell me, क्योंकि आपने obviously आपने ये तो समझा दिया that whenever your body जितना allow करता है you should try to push it and complete that many hours. आपने ये भी कहा कि मॉर्निंग में यू यूज्ड टू स्टार्ट ऑफ फर्स्ट विद द न्यूज़पेपर्स. सो करंट अफेयर्स पे ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. करंट अफेयर्स की तैयारी अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, हाउ डिड यू डू इट, एंड न्यूज़पेपर में भी क्या थी आपकी प्रेफरेंस, और व्हाट वाज द वे दैट यू यूज्ड टू गो अहेड with covering current affairs? So for current affairs, I did one newspaper and I did one monthly affairs magazine. And for newspaper also, I would say कि when you start reading it, तो कुछ टाइम तो आपको न्यूज़पेपर से ही अकस्टम होने में लग जाता है. बट धीरे धीरे इफ़ यू आर रीडिंग डेडिकेटेडली एवरी डे, आपको समझ आने लग जाएगा कि अच्छा यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ कौन से पेज पे होती हैं और कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली आई हैव टू गिव ऑन certain pages. Then editorials में भी you will be able to identify कि कौन सा editorial important है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है और कौन सा editorial ऐसा है जो आप शायद skip भी कर सकते हो. Every editorial need not be read. और I used to also make notes along with newspaper reading. So notes के लिए मैं कहूँगी काफ़ी, जैसे ये mistake मैंने भी करी थी that often people end up making summary of editorials. But that is not needed. आप कोई भी editorial या कोई भी न्यूज़ पीस पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से सिर्फ वो पॉइंट्स उठाने हैं जो कि यूपीएससी के लिए either from prelims perspective or mains perspective are important. For example, if there is an editorial on some electoral reforms, तो उस पूरे editorial में hardly 2 या 3 points होंगे जो आप कहीं ना कहीं use कर सकते हैं, तो only write those. Similarly, if you feel that there is some initiative by government that is mentioned in the newspaper और वो prelims में आ सकता है, तो उसके भी आप कुछ सिर्फ pointers in pointers format you can note them down. But definitely starting में eventually the time you take to read the newspaper should be maximum an hour and 15 minutes, and that too on days जब बहुत ज़्यादा content आ जाता है newspaper में. Otherwise on an average 1 hour I feel is sufficient to read. So एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, because you said that जैसे ही आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहते हो देन यू स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ इट कि कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है, कौन सी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू कुड जस्ट शेयर अ टिप सिंस यू ऑलरेडी डन इट कि हाउ कैन वी स्पॉट दैट. अगर कोई कंप्लीट बिगिनर ये वॉच कर रहा है उसे समझ आएगा ही नहीं, सो आप क्या सजेस्ट करोगे? तो एक तो जैसे मैंने कहा कि जब आप तैयारी स्टार्ट करें यू हैव टू लाइक रीड द सिलेबस, रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उससे थोड़ा बहुत पता चलेगा. बाकी जैसे दूसरी चीज़ कि आपको न्यूज़पेपर का पता होना चाहिए कि अच्छा फर्स्ट पेज पे सिर्फ देर आर हेडलाइंस, यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू देम. देन देर आर सम पेजेस जिसमें रीजनल न्यूज़ होती है, जैसे दिल्ली की हो जाएगी. देन देर आर, इफ़ आई टॉक अबाउट द हिंदू, देर इज़
pages on north, south, east, west. So they are regional news. You should, on those papers, you should spend maximum 2 minutes. That too, just scroll your eyes to see कि कहीं अगर by chance there is something. Otherwise, you can skip it. Then there is a page of nation. वो आप अच्छे से go through कर लें. मतलब अच्छे से भी उसमें मैं कहूँगी if you feel कि अगर कोई there is some kind of event that has been described, that okay, so and so person went there to inaugurate something. That is not important, so skip that. And then there will be page of editorial में भी मैं कहूँगी कि जो side होते हैं that are written by the someone from, they are not basically by readers, तो you go through them. उसमें भी gradually you have to select, like there will be some editorials जो आप skip कर दें, कोई issue नहीं है. Say there is कहीं पे elections हो रहे हैं और वो elections का debate चल रहा है, that is not very important, that can be skipped. Then there will be some I would say there will be some editorials which you should just read, but there is nothing to be made note of. Then there will be some editorials जो काफ़ी important हो जाते हैं and आपको उनका note भी बनाना पड़ जाएगा. So these was the three types of editorials that you can keep in your mind. और फिर जैसे हिंदू में काफ़ी specific pages भी आते हैं, जैसे FAQs and science section on Sunday. So they are also very good and they are very descriptive and explanatory. So definitely cover them. Okay, so क्योंकि अभी आपने नोट मेकिंग को टच कर दिया, सो आई हैव टू टेक दैट एज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट मेकिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है हर किसी की डिफरेंट होती है. जैसे कि आपने कहा एडिटोरियल्स में भी आप कुछ नोट करते थे, कुछ नहीं नोट करते थे. सो व्हाट वाज योर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर योर GS सब्जेक्ट्स, आल्सो फॉर योर करंट अफेयर्स? So note making, again I would say, is something that you learn as you go, but some tips that I can share from my experience is कि एक तो जैसे ये गलती मैंने करी थी कि I used to end up summarizing a book and call them notes. So they are not notes, and if I would strongly suggest कि don't end up summarizing books, क्योंकि UPSC has not given any reference list of any books. तो definitely हमें उसके books के हिसाब से notes नहीं बनाने. We have to make notes as per the syllabus, especially for mains. तो नोट्स में भी मैं कहूँगी कि फर्स्ट यू शुड थिंक कि व्हाट एम आई मेकिंग दीज नोट्स फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस और फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग. तो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स स्पेशली फॉर मेंस वेयर आई फील दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिसके मैंने भी सबसे ज़्यादा बनाए थे, तो आई वुड से कि आपके नोट्स में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आप अपने आंसर्स में चाहते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स मेंस के आप यू शुड मेक देम एज पर द सिलेबस हेडलाइंस. Then if I have to give an example, for example there is a topic of NGOs in GS2. So आपके notes में NGO की definition होनी चाहिए. अगर आप कोई छोटा मोटा डायग्राम बना सकते हो to show the linkage of NGOs with different stakeholders, say with government or with people or with civil societies, तो आप वो डायग्राम incorporate करें. Then you should note down some example of NGOs which are good also and which are bad also. देन उनका इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, उनके इश्यूज़ के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए. देन यू शुड ऑल्सो सर्च कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड NGOs में क्या ज़्यादा है जो न्यूज़ में है, थोड़ा उस पर आपको दैट शुड बी देयर इन योर नोट्स. इन द एंड इफ़ यू फील दैट देर इज़ सम कमिटी रिकमेंडेशंस, फॉर एग्जांपल सेकेंड ARC और सम नीति आयोग और एनी अदर कमिटी दैट हैज़ गिवन सम recommendations for the NGOs, you should incorporate that also in your notes. एंड अदर थिंग कि जैसे मैं अपने आंसर्स पॉइंट वाइज लिखती थी एंड आई यूज़ टू ट्राई टू डिवाइड देम से इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दीज काइंड ऑफ हेडिंग्स. तो आप वो चीज़ अपने नोट्स में भी करिए, बिकॉज as I said, notes will be a reflection of your answers. So everything, if you want to write your answers in paragraphs, then make your notes in paragraphs. But if you want to write them in points, do them in points. So I think very well put. मतलब आपने एक बहुत clear understanding दे दिया for note making also, that there were mainly 3
types of notes that you are making. Yeah. एक prelims के लिए, एक mains के लिए, and एक general understanding या knowledge के लिए. And as you mentioned, mains के notes should really reflect how you want your answers to look, right? Great. So, अब moving on to the preparation phase itself, let's go right at the beginning. CSAT के बारे में बहुत लोग miss कर देते हैं, and that's something our learners always get offended अगर miss हो जाता है. तो CSAT की तैयारी के लिए आप हमें थोड़ा सा बताइए, what was your background in bachelor's for your college, and उससे related CSAT कितना आपके लिए easy या difficult रहा था, and if you could share some pointers for our learners कि CSAT जिनके लिए बहुत scary stage रह जा रहा है, how can they do well in it? So I think CSAT is very important because I myself have come across people जिनका GS का cut off was getting cleared for prelims but they missed the CSAT. तो for CSAT I would say the first thing is कि आप एक previous year question paper पहले अच्छे से बैठ के उसको total 2 hours में attempt करके देखें and see where you're standing. If you feel कि आपका स्कोर सही आ रहा है, say it is first paper आपने attempt किया and you're getting something around 80, then I feel कि there is nothing to worry about. आपको बस थोड़ा सा उसी पेपर में अपनी strengths या weakness identify करने की ज़रूरत है and then you can calibrate how you attempt the paper. For example, if I have done my BSc in Physics Honours, so मुझे पेपर में ये realize हुआ था कि maths के question होते हैं उनमें even if my attempt is less, my accuracy was very good. तो मैं अपने पेपर में सबसे पहले वही क्वेश्चंस करती थी बिकॉज इट गिव मी अ सर्टेन श्योरिटी कि इतने मार्क्स तक आ जाएंगे. फिर कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में एक्यूरेसी वाज लेस बट सिंस टाइम कम लगता है तो वो अटेम्प्ट मैं वो सारे कर देती थी कि इवन इफ एक्यूरेसी इज़ लेस वो अटेम्प्ट ज़्यादा कर रही हूँ तो दिस विल ऑल्सो गिव मी अ गुड मार्क्स. हाँ, तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी. इफ़ यू फील कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया बट यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड, तो देन ऑल्सो आई वुड से कि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए कि मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कॉम्प्रिहेंशन. इफ़ यू फील कि आई कैन हैंडल मैथ्स, सो आई वुड से कि आप थोड़ा कुछ टॉपिक्स का एक देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. इफ़ यू कैन गो थ्रू सम कैप्सूल वीडियोस टू सी हाउ यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है कि प्रैक्टिस से वो ना हो. प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वो डेफिनेटली हो जाएगा. देन 2 more things that I would say कि when you are, please don't do CSAT preparation 1 month before the exam because then you will be compromising your time on general studies. Secondly, when you are attempting the paper, then also don't take CSAT lightly. I have come across people who have attempted like 40 questions out of 80, which is very less. So take your entire 2 hours ka time and attempt as many questions as you can and as seriously as you would do the general studies. I think not taking CSAT is a major reason why many people don't clear it. Understood. So मतलब give it as much of importance जितना आप अपने GS papers को देते हो, right? Great. So अब GS papers पे ही आ जाते हैं. So let's try to understand subject wise क्या थे आपके resources and preparation strategy for that subject. So take your pick. कौन सी थी आपकी सबसे favorite subject out of all of them? So I would say economy was something, as a subject it was my favorite in all those important. It was interesting for you. तो इकोनॉमी की तैयारी आपने कैसे की थी? What were your resources? What was your strategy? For prelims, I would say first you should go through the NCERTs. You can do all from 9th to 12th. In them, I think 2 NCERTs are most important. That is class 11th NCERT and class 12th की macroeconomics की. Once you do these NCERTs very nicely, so आपको एक न्यूज़पेपर में जो काफ़ी एडिटोरियल्स आते हैं बिकॉज एवरी अदर डे देयर विल बी सम एडिटोरियल ऑन इकोनॉमी, एक तो वो आपको समझ आने लग जाएंगे. देन टू बिल्ड अप फर्दर ऑन योर इकोनॉमी पोर्शन बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड आई थिंक फॉर मेंस एज वेल, आई वुड नॉट रिकमेंड एनी बुक. आई वुड से कि इफ़ यू कैन गेट सम hold on some coaching notes or some other institutes के सिर्फ economy notes from the point of UPSC, so that will be sufficient. Because if you go through the prelims paper every year 3-4 questions are asked which are very basic and fundamental.
लैंग्वेज शायद उनकी थोड़ी ट्विस्ट यूपीएससी इंटेंशनली कर देता है, बट वो एनसीईआरटीज़ की अगर आपने अच्छे से करा है तो वो हो जाएंगे. सिमिलरली काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप अपना न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से ही यू कैन कवर. आई वुड नॉट रिकमेंड एनी स्टैंडर्ड बुक एज सच फॉर इकोनॉमी. Okay. So economy के बाद let's move on to polity, क्योंकि again I think that could have also been one subject which you like. So for polity again I would say the NCERTs and Lakshmikant is the standard book. I did not make any notes for prelims from Lakshmikant because I think क्योंकि उस बुक में से सब कुछ ही पढ़ना होता है, तो you can directly revise from the book itself. And for mains I would say कि सिर्फ लक्ष्मीकांत इज़ नॉट सफिशेंट फॉर मेंस प्रिपरेशन. तो उसके अलावा आपको जैसे काफ़ी जो मैगजीन्स कंपाइल होती हैं उन्हीं में से यू कैन जॉट डाउन दी कंटेंट. अगर कोई कमिटी रिकमेंडेशंस वगैरह है, देन यू कैन यूज सम वैल्यू एडिशन मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल देयर आर नीति आयोग डॉक्यूमेंट्स. आई रेफर टू स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया एट 75 एंड दी 3-year एक्शन एजेंडा. देन GS2 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ा रेकमेंड, जैसे सेकेंड ARC के जो समरी ऑफ रिकमेंडेशंस होता है, दे कैन कम वेरी हैंडी टू गिव अ गुड कंक्लूजन. समटाइम्स वो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाता है कि व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर दिस. सो दीज वर द बेसिक थिंग्स फॉर पॉलिटी. So tell me this, like क्योंकि आपने नीति आयोग मेंशन किया, I just wanted to ask for a lot of beginners, जैसे even going through the नीति आयोग or even a lot of reports जो आते हैं, because I've heard a lot of toppers who mentioned that उन्होंने बहुत सारे reports को refer किया था because it makes your answer even better with all the numbers and all ना. So just wanted to understand कि ऐसे ये जो reports and government documents लोग होते हैं, how would you suggest for a beginner, how can he or she start going through it, recall the things, understand the things धीरे धीरे. Obviously it takes time, but what would be your suggestion? सो वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप ऐसी काफ़ी बार ऐसा आपको लगेगा कि मैं और पढ़ लूँ, पूरा पढ़ लूँ रिपोर्ट को, बट प्लीज़ डोंट डू दैट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर देगा. जैसे सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स के अंदर ही समरी दिया हुआ है इन दी एंड, एंड इट्स अ समरी ऑफ द रिकमेंडेशंस. और वो आई थिंक आप एक दिन अगर बैठेंगे तो आप सारी रिपोर्ट्स के समरी यू कैन गो थ्रू. उनमें से भी आपको सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करने की या याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपना सिलेबस अपने सामने रखिए एंड यू स्टार्ट वन बाय वन विद द रिपोर्ट्स, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यू गो टू द समरी. और जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि ये सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और आपको लग रहा है कि आप समझ भी पा रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम, जस्ट जॉट डाउन दोज पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर फॉर योरसेल्फ. That's and similarly, like I would say strategy for India at 75 is a very good document क्योंकि उसमें जो कंटेंट लिखा है वो बहुत ही UPSC फॉर्मेट में है कि they will discuss the problem with a lot of statistics and then they'll describe the problem in कंपार्टमेंट्स. फिर वो रिकमेंडेशंस भी देते हैं, तो उसमें से भी आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स बहुत बल्की होते हैं. एक तो आपको उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं जस्ट गो थ्रू दोज चैप्टर्स एंड फ्रॉम देम ऑल्सो मेक योर ओन वेरी कंसाइज नोट्स. किसी भी इशू के बारे में आप 4-5 प्रॉब्लम्स आप उठा लीजिए और कुछ recommendations. That is sufficient. Then you should just refer to your own notes and you should revise from them. I have seen many people who used to revise directly from them even on the day of the exam. So that in my opinion is not the right way. You should have your own notes from these reports as well. Great. So since आपने बहुत सारा आपने ऐसी चीज़ें कही है जिसमें बहुत रिकॉल करना है and all of that, let's go to a subject जहाँ पे बहुत कुछ याद करना होता है, which is history with all the dates and names. तो history की तैयारी आपने कैसे की थी? So history I would say because I don't have that background, so इसमें मैंने अपने सबसे ज़्यादा notes बनाए थे and as I mentioned before कि जो नोट्स मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए थे वो हिस्ट्री के ही थे. सो फॉर हिस्ट्री आई रेफर टू दी ओल्ड NCERTs फॉर एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न एज वेल, बट मॉडर्न का मोर इम्पॉर्टेंट बुक वाज स्पेक्ट्रम. इवन फॉर आर्ट एंड कल्चर आई डिड दी फाइन आर्ट्स NCERT. आई डिड नॉट डू एनी अदर बुक. एंड देन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री आई वुड से कि आप अगेन
कोई नोट्स आपको किसी टॉपर या कहीं और से कंसाइज नोट्स मिल जाएं, सो दैट विल बी अ बिट बेटर बिकॉज देर इज़ जस्ट 1 or maximum 2 क्वेश्चन इन मेंस, सो डोंट पुट इन टू मच टाइम. एंड देन आई वुड से कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो when you read the old NCERTs, you'll realize that everything is not important for UPSC, so you have to make those notes as well, keeping UPSC in mind. For example, UPSC is, if you see the past papers, it is not much interested in the political history, ki who was the king, who killed whom, that is not the thing. Our focus in those ancient and medieval also should be on society. What was the pattern of economy that was going, how was trade, then some art and culture in it, कि अगर कोई some dynasty or some ruler had major things done for literature or any other like music etc, you should make notes of that. And then I would say just revise from your notes, like once you have made notes from the NCERTs, because directly उनसे revise करने में आपको काफ़ी चीज़ें filter out करनी पड़ेगी, so that makes revision a bit difficult. So and time consuming also, so make your notes, especially if you're not someone who has a history background. तो आपने, since you were not from a history background, did you refer to 6 to 12 NCERT या सिर्फ 9 to 12 या 11 12? No, I just did the like old NCERTs. I think these ancient, medieval and modern they were in 11th and 12th only. So I just did that. I did not do before the 6 to 8th or 6 to 10th. Okay, so that's a good good benchmark. You didn't have any background in history, but फिर भी you referred to 11 and 12 for history NCERT. Yeah, even in that, if you feel मतलब first time reading में you might feel कि काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, grasp में नहीं हो रही हैं, so you may have to, like in the first reading don't make the notes. First reading में आप अपने आप कुछ चीज़ें underline कर लीजिए थोड़ा थोड़ा समझने के लिए. Once you have read a chapter, go through your highlighted things again to recall. Then in the second reading you can start making notes. Understood. So while we are at it, let's move to the next subject, जो है geography. So geography के लिए, if you can tell us a little, about your preparation, resources. Also explain to us, the maps बहुत important हो जाते हैं. उसको आपने कैसे crack किया? उसको आपने कैसे उसकी तैयारी की? So for geography, again, I would say NCERTs, and I also did GC Leong. Okay. So for NCERT, one thing I would say that, especially the 12th NCERT, which is for Indian geography, the content might be a little outdated because it has not been updated. So do make sure कि आप उसको update करके वहीं book में लिख लें. Then because the NCERT is very crisp and concise, I did not make any notes. I used to make like some small paper पे ही notes बना के छोटे मोटे. I used to put it in the book itself, ताकि अगर कभी भी जल्दी से revise करना है तो मैं उन pages से वहीं पे कर लूँ. Then as you mentioned for maps, so maps also जैसे Indian physical geography की book में जो जो चीज़ें हैं, I used to try to map them on like India's physical map, कि whatever if they have mentioned, they'll be mentioning a lot of hills, a lot of passes and all that. So you can put them on the map ताकि आपको थोड़ा recall भी better हो जाए. And even if you're not able to answer the question it comes, you might be able to eliminate. Then one other place where map becomes important is कि काफ़ी cities news में रहती हैं, international cities. So for them I used to just like in my phone itself I had a note, and whenever I came across some city that was in news, so I would just write down the name of that city with country and in 3-4 words ki why it was in news. Because often UPSC asks ki okay, where are these, in which country these cities are. Okay. So you can do that like throughout the year. Alright. So I think we've covered economy, polity, history, geography. एक चीज़ बताइए, out of the remaining, which was the one subject which gave you the most difficulty? The remaining subjects. I would say it would have to be environment, because whatever book is available
आई थिंक वो काफ़ी आई रेफर टू शंकर IAS, तो वो काफ़ी बल्कि बुक है, उसको रिवाइज करने में और याद करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ज़्यादातर हो भी नहीं पाती है. तो आई वुड से इट वाज environment, because other than that science and technology I was okay with it since I have done physics honors, so that was manageable. But environment, yes, I would say some difficulty. So for environment, you said that Shankar IAS is the main resource that you can do Shankar IAS. Along with it, you can in 12th class biology there are some chapters, 4-5 chapters that are there for environment. You can do that as well. Then current affairs is very important. So if any convention is in कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है या फिर कोई रिपोर्ट आई है, काफ़ी बार जैसे IPCC की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, सो करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन. Great. So you touched on science and tech also, and since you said आपका obviously physics का background है, so that was again a subject probably you even had interest in. फिर भी how did you prepare for science and tech? And if you had to give a suggestion to learners जो completely science background से है ही नहीं, what would you suggest to them? So for science and tech, I would say there is no need of any book as such. If you are someone who is not from science background, just whatever is in news, make sure कि आप चाहे किसी YouTube वीडियो से या किसी और सोर्स से उस चीज़ पर थोड़ा conceptual clarity आप ले आएँ. Because UPSC questions, they are very easy, they become very easy if you have that concepts clear कि what is black hole, what is gravitational wave, how are they different, and कोई भी अगर ऐसी चीज़ न्यूज़ में आती है, it will not take a lot of time, and I feel that rather than gathering too much knowledge, it's better कि आपको कुछ topics की because the topics that are asked in say prelims, they will be from this only, like biotechnology, nanotechnology, physics के कुछ आते हैं, so that you can do just conceptual clarity. For mains, I used to based on the current affairs and the magazine, I made a list of topics जो important हैं. Then मैं फिर उनके notes बना लेती थी कि and in those notes, as I said before, they would have some statistics. They would have, for example, if it is biotechnology, तो क्या different applications हो सकती हैं different field में. Then what the government is doing in that particular field, how it can be improved further. So in that manner, I made notes on say 15-16 topics जो मुझे लगा कि on the basis of current affairs and on the basis of previous year question papers as well, they are important. Great. So as you mentioned also, science and tech, and especially I think because science and tech both are things which are very rapidly updating, because har din there's a new invention, there's something new that has come in tech world and all of that. So I think you're right when you say that newspaper ko you need to keep following very closely to understand the syllabus. Okay, so ये तो ममता आपने बहुत अच्छे से हमें पूरे subject wise आपने बता दिया कि आपकी preparation क्या थी both for prelims and mains. Now if you just had to share any tip especially for prelims की जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी for the next prelims that's coming up, आप क्या suggest करोगे? What are probably 3 key points that they need to keep in mind, and also if there are any do's and don'ts जो आपको लगता है हर aspirant को याद रखना चाहिए? So first would be that the 6 subjects that we have discussed, they are the basic fundamentals, and आप इनको अच्छे से cover करिए, and you have to revise them a lot of times, like 6-7 times. I keep on saying to whoever asks me that इतना तो करना ही पड़ेगा. Then second thing, I would say that go through the previous year question papers very much in detail. Like अगर आपको एक तो you have to, so that you can get used to the language UPSC is asking, कि क्या कई बार कोई छोटा छोटा word कोई pointer बन सकता है. Sometimes कुछ options जो दिए होते हैं उनका आप डिटेल देख लीजिए, because they might be asked again in the paper. So that you can do. Then third thing, I would certainly say कि आप mock test you should practice a lot, and उनको practice करने के बाद एक तो आप चेक करिए कि जो आपका static है वो सही जा रहा है, उसमें you are not making a lot of mistakes, and जो डायनामिक पोर्शन है उसमें आप किस तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं, आपकी उस स्ट्रैटेजी को रिफाइन करिए. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन द पेपर, दैट ऑल्सो यू विल कम टू नो थ्रू द मॉक टेस्ट. एंड द ओनली डोंट आई वुड से इज दैट डोंट रन आफ्टर टू मेनी सोर्सेज, एंड डोंट ट्राई टू सर्च फॉर एनी न्यू बुक just because one question came from it the last year.
that is not possible, so don't do that. Great. So I think I just have 2 questions for these 3 points जो आपने बताया very well. So previous year question papers में कितना previous should an aspirant go? Like how many years is needed? So for prelims, I would say since the new pattern is there 2013, so from then to till now you can do all the papers. So starting from 2013. Yeah. Great. And this the third point that you mentioned was mock test. So आपने कितने mock tests दिए थे and when did you actually start attempting these mock tests? And अगर आप थोड़ा ये भी बता सको कि start में आप कितना score करते थे and by the end of it how much were you scoring? So I would say that in my first attempt, I think I did around 22 mock tests. In my second attempt, since I had a lot of time because of COVID, so I did around, I think 35 plus. Okay. So I would say कि when you should start giving mock test. So if you are 5-6 months before the prelims, जब आप अपना prelims dedicated तैयारी शुरू करते हैं, I would say you should start giving the mock test then itself. आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी मतलब कि वीकली दीजिए, डोंट गिव इट एवरी डे बट गिव इट वीकली, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट अर्ली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स और आपके पास टाइम होगा उन्हें करेक्ट करने का. इफ़ यू थिंक कि आई कैन अटेंड लाइक 40 mock tests 40 days before I'll do one every day, तो attempt तो कर लेंगे, but if you are coming across कि okay this is what I am lacking, you will not have time to correct it. So I would say start at least like 5 months before, but when you are starting that early, don't, this one in 1 week is enough. Then for strategy wise, I would say कि marks eventually they improved in the mock test, but my marks in mock test were never like very good कि 100 plus 110 plus. So don't worry about it too much. Just realize that the idea of mock test is कि थोड़ा सा प्रैक्टिस काफ़ी कर लेंगे तो उस टाइम आपको डर कम लगेगा. देन वट एवर मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, कि स्टैटिक में जस्ट एज्यूम कि कोई अंडरस्टैंडिंग की कहीं कमी थी या फिर फॉर एग्जांपल यू मिस सम टॉपिक्स और उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे, तो मेक श्योर दैट यू कवर दैट टॉपिक. सिमिलरली जैसे एलिमिनेशन में भी एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्टाइल्स, तो आई यूज़ टू एनालाइज कि कितने क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेशन के थ्रू करे हैं, उनमें से क्या मेरी एक्यूरेसी है, फिर व्हाट वाज द लॉजिक ऑन बिहाफ ऑफ विच आई अराइव्ड एट दिस आंसर, उसमें क्या फ्लॉ था, कैसे मैं उसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. सो दैट दोज आर द सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ आफ्टर यू अटेम्प्ट द पेपर. सो आई वुड से कि इफ़ यू आर गिविंग 2 hours टू अटेम्प्टिंग द पेपर, एटलीस्ट 1.5 hour you should give to analysis as well. Great. So abhi, just because you mentioned this thing that mocks me, don't be too bothered about marks kya aa rahe hai, that's exactly where my next question is. Kyunki us mocks में usually जब scores कम आने लगते हैं, a lot of people get demotivated, and I think UPSC का preparation itself is something which needs a lot of motivation to go through the entire time, right? तो इसके लिए आप क्या कहोगे? Was there any moments in your preparation जब आप demotivate हो चुके थे, where you thought I would probably give it up, and अगर ये नहीं भी हुआ था, then what would you suggest to the others कि जब demotivation आए भी, what should they do and how can they cope up? So I think that phase comes with everyone. One thing I would say is कि I don't know how helpful or meaningful it would sound, is कि have a very strict timetable. If you are disciplined and if you can discipline your mind in a certain way, that will help you get over those lows during the preparation. Then जैसे if you feel कि आप बीच बीच में breaks ले लीजिए and you can go out with friends, especially friends who are not preparing for UPSC, because वो एक अच्छा break हो जाता है. Then I would say कि breaks भी आप ले रहे हैं तो you should have like it fixed in your mind that I'll be taking 1 break every week or 3 breaks a month. Don't let it get out of hand, because that will become very counterproductive. And other than that, I would say कि if you feel demotivated because you're not able to get certain scores in mocks, as you said, तो go over it कि why you're scoring less. You can discuss it with some friend who is also in this preparation stage, कि वो उनके कितने scores आ रहे हैं and how are they attempting the paper. If you know some senior from college or friend who has cleared it, so ask them. So discussing it a little bit is also a way to get over the like bad that you feel because you're scoring less in the mock papers.
Great. So जैसे कि ममता ने कहा, if you are looking out and you are feeling demotivated, obviously reach out to your friends, your seniors, and you can also reach out to educators, and the India's best educators currently जो UPSC के लिए तैयारी करा रहे हैं are on Unacademy. So if you want to check that out, you can obviously subscribe to Unacademy, and there'll be details in the description. Do use the code CTwT because that gives you an additional discount. Unacademy. Let's crack it. History is the story of change and progress. It is the story of us all. Time travel with me to different periods in Indian history. I am Abhishek Srivastav, your educator for UPSC CSE, and I'll guide you till the end of your learning journey. मेरे टाइम ट्रैवल बैच में एनरोल करें और सीखें पूरी इंडियन हिस्ट्री मेरे साथ. Get inspired by Indian history at Unacademy. So, Mamta, जैसे कि आपने अभी ऑलरेडी हमें समझाया about the entire preparation phases, I just want to quickly go to the GS papers. And अगर आप एक एक पेपर को लेकर, if you can just recount a little, आपकी तैयारी उस पर कैसे हुई थी, and anything that you would like to share with our learners for each of the GS papers, that what should they keep in mind when they are preparing and attempting those papers also. So for GS, as I said before, first you have to make notes according to the topics. In GS1 you might not do that because history को आप पूरा क्लब कर सकते हैं इकट्ठे और geography को आप इकट्ठे क्लब कर सकते हैं. But say for society, so you should make notes for society. And notes में मैं कहूँगी कि जैसे GS2 में I refer to the second ARC reports. In magazine compilation, current affairs magazine compilation, they will give recommendation by law commission etc. You should do them. You should also make a list of important articles of the constitution, important judgments by the Supreme Court जो आप questions में use कर सकते हैं. And then for international relations again, जैसे आप जितने भी टॉपिक्स हैं कुछ उनमें अपनी एक हेडिंग्स सब हेडिंग्स सोच के रखें. फॉर एग्जांपल फॉर पॉलिटी और फॉर गवर्नेंस पोर्शन, political, social, economic, administrative, judicial, these can be good headings. For international relations you can have strategic or military or people to people, soft power, hard power, these kind of headings in your mind because इनसे थोड़ा the thought process also gets streamlined. Then similarly for GS3 portion you can have I refer to नीति आयोग strategy at 75 extensively because काफ़ी topics हैं. कुछ topics के लिए you very easily find value addition materials in the market, so just refer to them. And here also you can have headings कि for example science and tech में health sector है, education sector है, urban, agriculture, these kind of headings you can have. For security, I did the book on internal security in India. I made notes from that. And for disaster management, again, I would say कि कुछ जैसे जो frameworks हैं, Sendai framework, etc. You should make 1-page note on that. And you can also refer to the NDMA guidelines. And so the basic idea is कि you should have, even if there is a page, that is fine, but you should have some material on each topic so that if a question comes in the paper, आपके पास कुछ technical subject से related, उस topic से related लिखने के लिए हो. Then for ethics, I refer to my class notes of ethics, and then in terms of value addition, you can do some names of good bureaucrats who have been known for some good practices. कुछ quotes, जैसे इस बार मैंने हिंदी के जो government institution के mottos होते हैं वो भी मैंने लिखे थे. I compiled a list, and these some ethics में जैसे आप कुछ ethical terms जो एक तरह से उनकी list बना सकते हैं 50-60 की, which you can use in your case study also. One thing that I would say कि don't do is that don't overdo, as in don't spend one day to make notes on just one topic of mains. Otherwise you'll not be able to complete, because वो feeling आती है कि इतना कुछ available है online भी offline भी, so you'll feel like कि ये भी कर लें वो भी कर लें. Have a time limit in your mind कि I will make notes on this topic in 3 hours. Okay. So you have to do it in 3 hours. Otherwise, it'll just keep on extending and extending. Great. So because you covered the GS papers also, case studies भी आ जाती है उसमें.
anything that specific you would like to highlight about case studies? आप कैसे prepare करते थे, and if you could just suggest something to the learners. So for case studies, I would say कि आप थोड़ा सा एक बार काफ़ी जगह previous year toppers की answer sheet होती हैं, तो just go through them, see the different formats in which people are answering their case studies. उसके बाद आई वुड से कि एक बार वो फॉर्मेट आपको पता चल जाए, आप अपना भी एक लेआउट तैयार कर सकते हैं कि दिस इज़ हाउ आई विल बी, क्या मैं इंट्रोडक्शन में डालूँगा, किस तरह के मतलब यू कैन यूज़ आर्टिकल्स, यू कैन यूज़ सम काइंड ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, और कंक्लूजन में भी आप कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई स्लोगन डाल सकते हैं, कोई श्लोक डाल सकते हैं. एंड then it's all about practicing. Like I would say कि besides writing just GS4 mock paper, if you're doing, you can practice the previous year question papers से case studies, because it's a quite scoring portion, so उसका थोड़ा extra practice definitely do. Will help you. Great. तो अभी क्योंकि we've already touched all subjects, I think आपका optional ही बच जाता है. So tell us a little more about optional की तैयारी आपने exactly कब से शुरू की थी, and again similarly what were your resources for that, and strategy for your optional what was it? So my optional was physics, which is I mean, like, it's not a very common optional. The reason I took it is because I have done my graduation in the same. So I think कि optional at least 70% तो आपका main से पहले भी prepare होना चाहिए. And irrespective of the option that you have, I would say that do make your own notes. And notes भी जैसे I used to make them in multiple levels, कि एक पूरे standard notes, then one for revision, then one for revision just on the day of exam or one day before it. And again for optional also you should definitely take a mock test series. उससे आपको और आप अपनी answer writing strategy को refine कर पाएंगे. Whatever strengths and weaknesses that you have, you can identify them. If I have to talk specifically of like physics optional, I would say कि स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनको आप रेफ़र करिए, हर टॉपिक को प्रिपेयर करिए. डोंट लीव एनी टॉपिक ऑफ ऑप्शनल, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड इन UPSC. एंड ऑल्सो डोंट रेफ़र लाइक इन फिज़िक्स, आई वुड से कि ऑनलाइन काफ़ी और लोगों की नोट्स अवेलेबल होंगे, तो यू कैन रेफ़र टू देम, बट प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन देम कम्प्लीटली. नोट्स शुड ऑलवेज बी योर ओन. सो गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स एंड मेक योर ओन नोट्स. डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स तो डेफिनेटली करने हैं. एंड इफ़ टाइम परमिट्स यू कैन ऑल्सो गो फॉर द अनसॉल्व्ड वंस. Okay. So since you did mention that physics is not a very common optional taken, so even I'm not aware of the standard books, so some of the books if you could recount. So there are 8 topics, 4 in each of the papers. So for mechanics I did DS Mathur. Then for optics I did Brijlal and Subramaniam. I did for numericals Ajoy Khatak as well. For electricity and magnetism I did Griffiths, and for thermal physics I did Garg, Bansal and Ghosh. Then in paper 2 for quantum I did H.C. Verma and M.C. Jain. For atomic physics I did Rajkumar. For nuclear physics is like there's no one good for it, so I would say like you can refer to D.C. Tayal, and topic wise आप कुछ books देख सकते हैं. In this case you can also refer to the notes of toppers that are available. And for solid state physics I did Puri and Babbar. Great. So I think optionals GS सारे cover हो गए हैं. We now finally move to the interview stage, which is the personality test, right? So tell us a little bit about आपका कैसा रहा था experience in the interview round. If you remember any question which was tricky for you, जहाँ पे आप अटक गए थे, anything like this that you would like to share. आपने interview की तैयारी कैसे की थी, and how was the interview round? So in my first attempt I was quite nervous in my interview, but I think I improved upon that in my second attempt. So for like तैयारी के लिए I would say कि आप एक तो अपने DAF के बेसिस पे अच्छे से रिसर्च करिए. उनमें से आप क्वेश्चंस खुद बनाइए. काफ़ी क्वेश्चंस यू कैन मेक आउट ऑफ योर डैफ, और उनको आंसर यू कैन आंसर देम. देन वन थिंग आई डिड दिस टाइम इज़ कि आप लाइक फ़ोन में अपना इंटरव्यू खुद लेकर आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो जैसे कोई भी टॉपिक
पिक किया कि हॉबीज़ का है, तो स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चंस ऑन योर हॉबीज़ और आंसर के बेसिस पे फॉलो अप क्वेश्चंस करते जाइए. एंड बाय रिकॉर्डिंग यू कैन जस्ट गो बैक एंड सी कि अच्छा कहाँ पे गलती हुई, आर यू गिविंग वेरी लॉन्ग आंसर्स और is the answer structured well or not. Then I also did mocks. So in mocks I would say कि don't overdo mocks because वो काफ़ी बार बहुत ही like manufactured सा फिर आपका आंसर देने का तरीका बन जाता है. तो I think 5 mocks is okay that you can do. You can keep a gap of say 10 days in each of your mocks ताकि जो भी आपको reviews मिल रहे हैं आप उस पर improve upon कर सकें and then you go for the next mock. I think आपने बहुत ही अच्छी बात कही because it doesn't make sense just going one after the other mocks. Yeah. Because जैसे कि आपने कहा 10 दिन आप लेते थे to review that and make changes to it. And I think that's a very very good way of approaching the interview round. ऐसा कोई भी question जो आपको याद आ रहा है which was a tricky one or something which made you think for some time? So I was asked in both my attempts, my questions have been quite a lot of questions have been from physics because it's my graduation subject also and it's my optional also. But for someone who is of physics optional, I would say कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है because they'll not be technical physics questions. They'll be asking general. जैसे इस बार मुझसे पूछा था कि are physicists trying to disprove God? Okay. So this is like a very this is more like an ethics kind of question. These are the kind of questions they'll ask कि why did you not pursue physics further और क्या research हो रही है अभी, is there a stagnancy that has been arrived in physics. So बहुत ही general questions होते हैं and as I said I was asked this question कि are physicists trying to disprove God. So this is, I don't think this is a question someone can guess beforehand. So just take 10 seconds, 20 seconds to think over it and then calmly you can give आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग में जो भी आंसर है आप दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई सेड दैट देर आर सो मेनी फिजिसिस्ट हु देमसेल्व्स बिलीव इन गॉड. Many the biggest physicists they do, so there is no such thing that they are trying to disprove God. So there was no such question जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोई कॉर्नर कर लिया हो. And I think that is also the format these days, that they are not trying to scare you. They make you very comfortable and then they will start with the questions. Great. So ये I think as all our the stages of the exams finished, हमें ये बताइए फाइनली जब एग्जाम्स ख़त्म हो गए थे, हाउ कॉन्फिडेंट वर यू दैट इस बार तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है? So I think I was expecting that I'll be able to improve my rank, but this rank I was certainly not expecting. So what was your first reaction जब rank आया? What happened? I just wanted to make sure that it's my roll number is correct. So I just kept on rechecking that. And I think as I said before also, there is a certain आप stagnant feel करते हो if you are giving too much time to the preparation. And so I was happy that I got out of it because your mind also will not be very much interested in doing the same thing again and again. And so it was very good feeling that I am out of this cycle now. चलिए, I think that is a very big deal that happened and obviously आपने बहुत ही अच्छा किया and so happy for this. What was the reaction of your parents? I'm sure they were super happy. But कौन थे आपके साथ at that time? So at that time my mother was there with me and my father was just on his way back from office. He had I think he was on the way and they were also extremely happy. And as I said, everyone was expecting that I'll be able to improve my rank, but this rank no one was expecting. So that was a bit of shocker ki this rank happy shock. Yeah, happy shock that this rank has been achieved. चलिए, ग्रेट. सो क्विकली मूविंग टू वन सेक्शन जो है हमारा, इट्स कॉल्ड द रैपिड फायर. यहाँ पे आपने बहुत सारा हमें एग्जाम्स के बारे में बताया, बट यहाँ पे वी जस्ट वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर ऑफ यू एज अ पर्सन. सो आई हैव सम क्विक क्वेश्चंस जो मैं आपको पूछने वाली हूँ और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में. यूजुअली लाइक जस्ट अ वर्ड और अ लाइन फॉर योर आंसर. रेडी फॉर योर क्वेश्चंस? Sure. Cool. If you were a part of a pack of crayons, आप कौन सा कलर होते and why? I think I would choose blue. Why? It's just the color that I gravitate towards. Okay.
And if you were given an option to get into a time machine and go back in the past and meet anyone who's probably not there now in the world, on Earth, so who would you like to go and meet? I think I would like to go back and meet Dr. APJ Abdul Kalam, because I feel that out of all the people that have been there in my lifetime, he has been a very inspirational personality. So definitely him. And if you had an option to ask him just one question that he would answer, what would you ask? I would just ask him how he has stayed so humble despite being, he was the president of India, and then again he went back to teaching. So how he has stayed so humble and so grounded in his life. Great. And who would be that one person in your life who, who you look at, who has been a source of motivation and also, has been always your constant support? So I would say my family, that is my parents and my brother, and my friend also, like my best friend from school. She has been there throughout. So definitely them. Okay. And one last question. If you were given a choice to go back and relive any 1 year of your life, kaun sa hota wo and why? I think just maybe some college year, because that was a phase of life that is usually very easy and chilled out. So yeah, one college year. Chaliye, great. So I think you did very, very well. All your answers, just like everything else, is perfect, on point. We do have something small here from our team of CTwT here for you. So here, Mamta, this is something small from our team. I hope Thank you aapko so meetha much. pasand hai. Thank you And so much. This is more to celebrate your success too. Great. So now, just to wrap up this entire episode, jahan pe aapne itna, you helped all our learners by sharing so much of information. There is a live session which I hope you all have already been a part of, wherein the recent questions that you had all sent on the community has been answered. But for everything else, I'm sure इस episode में Mamta ने सब कुछ cover कर दिया है आप सब के लिए. So I would like to end this episode, but before that, I would request you to make, just give out one message to all our learners जो आपको देख रहे हैं, even to all the aspirants who look up to you as a source of motivation. What would you like to tell them? So I would like to say that in this exam, hard work is definitely one of the first things you need to do. But after that, a lot of planning, and I would say just you need to ask yourself some tough questions and have honest answers to them. So if you do that and keep your preparation very simple, and very simple, don't go after too many things. And I like to wish everyone who is watching and aspiring to clear the civil services all the very best. Thank you very much. Thank you so much, Mamta, for giving us your time today. And मुझे भी personally बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. Thank you so much. And I just feel that you have this nice, positive, sweet aura around you. And I just hope and I wish you all the very best for the future. It feels good to see, such officers coming up, and it feels great. What all will you be doing in the future for us? So I wish you all the very best, and we look forward from the entire team to see a lot of good work coming from your end and hearing more about you. Thank you so much. Thank you.